यूट्यूब है अभी। यूट्यूब है अब। 15 मिनट का सेशन है बस। Okay, good evening everyone. Welcome to. Am I audible? Am I audible and visible? Fine. Everyone, welcome to Unacademy's YouTube channel and welcome to my session. Today's session is all about how to make no voice. Janvi, okay, now can you hear me? Nuke, good evening. Rohini, good evening. Okay, fine. It's okay now. Okay, fine. So, good evening. We are going to do today's session is all about how to make the effective notes for your exam, whatever you are preparing, whatever exam you're preparing for. So, meanwhile, others are joining. Let me introduce myself. My name is Lakshmi Kushwaha. I am NET qualified in Industrial Relations and Labor Welfare. I am verified educator teaching on Plus platform of Unacademy. You can follow me on Unacademy for the courses related to labor legislation, industrial relations, organizational behavior, human resource management, social security. If you're preparing for any PSU, if you're preparing for NET, if you're preparing for EPFO, my courses, my classes would be useful for each of these exams, right? So do follow me on Unacademy if you haven't, and do share with others, and this is my like link on an academy or the profile on an academy. You can follow me, you can search me by the name Lakshmi Kushwaha, follow me there. Yes, most important, my upcoming course is the detailed course on human resource management, OB, and industrial relations. So basically, focusing on human resource management, your practices and principles of management, organizational behavior, unit 1 to 5. So even for those who are having subject code management 17 or those who are preparing for commerce, it is useful for them as well, right? So do enroll for this, take the subscription if you haven't. This is the previous year question series which we are currently running. Do enroll for all the classes. Very, very useful for those who are preparing for NET exam 2021. Okay, we are going to do the previous year questions in this series. Prashant, good evening. How are you? Yes, the most expected MCQ series. Just now we had the class. I believe those who have attended it enjoyed the session. We are doing here the most expected MCQ questions for basically the topic wise. We are doing it for HRM. So this is also for people who are preparing for code 17 and commerce and HRM. All of them can be benefited by this. Okay? Use my code Lakshmi 12 or Lakshmi Live whenever you are subscribing to the course. Benefit is you can get the classes limited, unlimited live and recorded sessions, paper 1, paper 2 as well. So every educator who is teaching in NTA NET category, you would be able to access their class, download the PDF and get benefited. So enroll, take the subscription. Don't forget to use Lakshmi 12 or Lakshmi Live. Fine. Okay, fine. So now today's session is all about how to make effective notes. Every most of the time we study, we keep on studying the things, we forget the things, right? And we forget the things or we get confused. Do we need to write everything? How the note should be? Lengthy hone chahiye, short notes hone chahiye? What should be the format actually? ठीक है? See, whenever you're preparing for any exam, either that can be an NTA NET exam, either it is PSU or your EPFO or any kind of bank exam or any other exam.
Whenever you are studying certain topic or whenever you are studying certain syllabus, the first thing that you need to do is you need to understand what is this syllabus. Write it down. So your notes actually first start the page of your note or whatever diaries, whatever book, whatever register you're preparing, it should always have the syllabus. The syllabus with sub points. Remember, when you're preparing the notes for yourself, either the detailed notes or either the short notes, it should always have the syllabus in starting. ठीक है? And how you would start it? See, कैसे start करना है? If you're preparing the detailed notes and either the short notes, I would give you the explanation for both of them. Detailed के लिए कैसे and your short notes के लिए कैसे. First thing that you would be doing is, whichever the exam is, find out the syllabus for it. Under that syllabus, write the subtopics. Very important. It has got a lot of importance when you are writing the subtopics. And leave some space. Write the points and leave the some space for extra topics which you would be adding later on. This first page, first 2 or 3 page having the syllabus of your exam or whatever course you are preparing will give you the analysis what you have completed and what is yet pending. So once you are done with this syllabus wala part, list bana li, subtopics bana liye. Now there comes, now then comes your first, if you are the one who, Sunny, good evening, how are you, Sunny? Sorry, I missed it. Okay. Yep. Khushbu, good evening. Okay. Anybody else whom I didn't wish? Everyone, welcome to the class. See, when you are making a detailed notes, pehli cheez, you don't have to again see whenever you are studying from Unacademy classes or you are studying from any books. The books, written material, and short notes when you are making your diary notes. Okay. Detailed notes, first chapter or whatever unit you are starting, unit wise, again on that particular first page, first unit, write the topics that you are going to cover, the points which you need to cover. Always make sure the list of the topics that you have to cover in that notes, because you won't be confused last में कि मेरा कौन सा point रह गया है, कौन सा point बाकी है, कौन सा cover करना है. Once you have the list, and always have the space available for extra thing. How you make the detailed notes? Either you're studying from the books, either from the PDF. Right, suppose I am studying the topic called HRM, Human Resource Management में I am studying the topic recruitment. ठीक है? So for the recruitment I am making the detailed notes. Again, the detailed notes का मतलब ये नहीं है कि जो आप बुक से पढ़ रहे हो या PDF से पढ़ रहे हो वैसे का वैसा ही you would be copying. That's not making the notes. Making the notes means something which whenever you revise it, it would be easy for you. You don't have to read it completely. तो बुक में और आपके नोट्स में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा. ठीक है? So for example, I'm studying the recruitment. I would add 1, 2, 3 one liners definition. ठीक है, रिक्रूटमेंट के डेफिनेशन पूछते हैं तो आई वुड राइट द ऑथर एंड उसका केवल और केवल बुलेट पॉइंट. आई वोंट राइट एवरीथिंग, सारा डेफिनेशन नहीं लिखूंगी, उसमें जो 2-4 बुलेट पॉइंट है आई वुड राइट इट. सेकेंड ऑथर के लिए आई वुड राइट द बुलेट पॉइंट्स. देन कम्स योर रिक्रूटमेंट के टाइप्स या सोर्सेस. So I would make a diagram like this. I won't write sources of recruitment or something. I would make a diagram like this: internal sources, external sources. Here only I would add further sources here. ठीक है? Always try to make the chart. Pictorial representation will make your study easy and you won't be ever tired, or it won't create a bore. You can say keywords, right? चार्ट से, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन से इट यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग, बोरिंग नहीं लगेगा जब आप दोबारा उसे पढ़ोगे. ठीक है? योर राइटिंग, समटाइम्स सम पीपल हैव वेरी गुड राइटिंग, दे आर गुड विथ राइटिंग स्किल्स, सो इट इज ईजी फॉर देम टू राइट इन अ प्रॉपर वे. बट फॉर दोज पीपल दोज हु आर नॉट इन द राइटिंग हैबिट, उनके लिए जो पिक्चर्स हैं, if they can link with the diagrams, that is more important. ठीक है? So always make internal sources, external sources. Then I would move to next, types of the recruitment.
ठीक है. So I would make this way, types of the recruitment. So again a chart. I would try to cover everything here only, right? इतने short point keywords bullet points लिखो, don't write everything, though it is the detail, but you don't have to copy everything. डिटेल में लिखो, उसका डिस्क्रिप्शन लिखो, ठीक है. दिस इज हाउ यू प्रिपेयर द डिटेल नोट्स. देन कम योर डायरी नोट्स और शॉर्ट नोट्स. इसका मतलब क्या, पूरा का पूरा एक टॉपिक, डायरी नोट्स का मतलब होता है पूरा का पूरा एक टॉपिक यू शुड बी एबल टू कवर इन दी सिंगल पेज. रजिस्टर का एक सिंगल पेज में इफ यू आर एबल टू कवर वन कंप्लीट टॉपिक, दैट इज द डायरी नोट्स और शॉर्ट नोट्स. यानी whenever you are sitting for the revision, single page will complete your full topic. So you have to make very short keywords. So यहाँ पे जैसे again recruitment, ठीक है. what I would do in recruitment, इसी heading में I would make this way: sources, I would write here internal external, I will write here types 1 2 3 4 here only, not much, ठीक है. this is diary notes, इतना लिखा. then I would write here advantage disadvantage, बस खत्म. this is the short note diary notes. similarly performance appraisal or performance management, meaning 2 words में types, training, on job off job, would make a chart, बस. no detailed explanation in diary notes or short notes, ठीक है. जो भी नोट्स आप बनाते हो, ट्राई टू मेक श्योर दैट यू डोंट राइट कंप्लीट. तो आपकी बुक्स में और आपके नोट्स में कोई फर्क नहीं होगा. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ऑलवेज यूज द मिनिमम सोर्सेस, ठीक है. 2 सोर्सेस, 3 मैक्सिमम. डोंट मेक 5 6, यहां से भी ले लिया वहां से भी ले लिया तो नोट्स ही नहीं बन पाएंगे. मैक्सिमम 3 सोर्स, दैट्स इट. इससे ज्यादा सोर्स मत यूज करो अपने नोट्स बनाने के लिए. बट यस, नॉट वन सोर्स, एक सोर्स पे मत रिलाई करो, एटलीस्ट 2 शुड बी देयर, बट इट शुड नॉट एक्सीड 3. तो मैं यहाँ पे अगर इस बुक में कुछ कवर नहीं हुआ है तो दूसरी बुक से या दूसरी पीडीएफ से कवर हो जाएगा. सो दिस इज हाउ यू वुड बी मेकिंग दी नोट्स. क्वेश्चन you can ask me. कुछ और any problem that you face while you're making the notes, you can ask me. क्या प्रॉब्लम आती है, क्या नहीं याद रहता है, और try to revise the things, कैसे आप रिवीजन करोगे. Yes, you can. Janvi, it's enough. I always say my PDF are enough. ठीक है. It's not necessary. I always says Janvi, I have always given you the detailed one. आप अगर उनसे satisfied हो, you don't have to make anything. डायरी नोट्स बना लो. ट्राई टू मेक, आप पूरा का पूरा डिटेल नोट मत बनाओ, डायरी नोट. डायरी नोट यानी यू स्टडीड सर्टेन टॉपिक, आपने एक पीडीएफ पढ़ा, मेरा पीडीएफ डाउनलोड किया, उसे पढ़ा. जब आप रिवाइज करते हो, रिवीजन करते हो, जस्ट ट्राई टू राइट मेन पॉइंट्स. केवल और केवल एक सिंगल पेज है, यू स्टडी लॉ लेजिस्लेशन, ठीक है. आई एम राइटिंग हियर फैक्ट्रीज एक्ट, एक ही पेज है, ये सिंगल पेज, ठीक है. आई डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फैक्ट्रीज एक्ट applicable to 10 or more with aid of power, 20 or more without aid of power. Definition, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट है वो. हजार्डस प्रोसेस, कौन से सेक्शन से क्या कवर हो रहा है, कितनी कमिटी है, साइट अप्रेजल कमिटी, इंक्वायरी कमिटी. सो आई वुड जस्ट राइट बुलेट पॉइंट्स when I would be revising. So I would write the bullet points and I would try to remember the points related to it. बस इतना ही करना है. अगेन द सेकेंड लेजिस्लेशन, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर, इतने में ही खत्म हो जाना चाहिए. दैट इज द डायरी नोट्स. इतना छोटा करोगे एंड ट्रस्ट मी दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट. ज्यादा बुक्स पाइल अप भी नहीं होंगे, रजिस्टर पाइल अप नहीं होंगे. यू वुड हैव द फ्यू पेपर्स विथ यू टू स्टडी एट द लास्ट. एनी अदर क्वेश्चन? And I always say, even the books are not required, the PDFs are enough. But still, if you want to refer something, so we have the Pearson publication for labor legislation, and Sinha, and your Aswathapa for HRM, your Robbins for OB, organizational behavior, Robbins, Stephen Robbins. About my experience, what was my experience and procedure? So
वाल्या, आई यूज टू मेक द डिटेल्ड नोट्स. ठीक है, आई डिडेंट हैव एनी सोर्स फॉर प्रिपरेशन, सो माई सोर्स फॉर द स्टडी वॉज माई डिटेल्ड नोट्स. ठीक है, क्यों? मुझे इनिशियली पढ़ना था लॉ लेजिस्लेशन वेयर देयर वेर नो क्लासेस अवेलेबल. सो उसके लिए आई यूज्ड मिनिस्ट्री साइट. ठीक है, मिनिस्ट्री साइट एंड द बुक, दोनों को यूज करके आई प्रिपेयर्ड माई डिटेल्ड नोट्स, वेरी डिटेल्ड नोट्स. बट दोज नोट्स वेर with the diagrams and charts. My notes were always, and even now you can see the PDF that I provide you, they are always with the flow charts and diagram. So I prepared those notes, revised them. I had the plan weekly revision. Weekly revision. Revision doesn't mean to by heart the things. At least go once through it. So weekly revision is important. ठीक है. प्रोसीजर क्या होना चाहिए वेन एवर यू गो थ्रू एनी क्लासेस? यू आज एक टॉपिक कर लिया, सपोज आपने आज एक एमसीक्यू सेशन किया किया अभी मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू, यू स्टडीड फ्यू न्यू टॉपिक्स, कुछ चीजें आपने ऐसी पढ़ी जो आपको लगा कि आज हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा है. पिक दोस, वही उठाओ, केवल सब कुछ मत पढ़ो, वही टॉपिक उठाओ जो आपको लगा नया है, उससे रिलेटेड पढ़ लो, बुक से, गूगल करके, किसी भी तरीके से, एंड राइट इट डाउन. दैट इज, बट रिवीजन इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, रिवाइज इट, एक बार गो थ्रू करो उससे, सी इट, एक्चुअली एक बार देखना जरूरी है. यस, हाउ टू नो, दैट इज द रिवीजन. जानवी, क्लोज द बुक्स. अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है? क्लोज द बुक्स, ट्राई टू रिमेंबर व्हाट यू कैन. If you're studying the legislation, close the book. Without opening the book, try to write down whatever you can. ठीक है, whatever you can recall, revise it. That's it. That is how you would be able to understand कि कैसे आपको लॉ याद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं. ठीक है. Yes. Any other question? No questions? Okay, fine. So I believe whatever I told you regarding preparing the notes, what we can improve our study, especially for the plus learners. Uh, रिवीजन वाल्या, सी, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो, कोई भी क्लास कर रहे हो, आधे घंटे बाद, एक घंटे बाद, जस्ट रिवाइज इट. सी, यू लिसन, जब आप क्लास करते हो, आप उससे सुनते हो, तब वो समझ में आने लगता है, वो समझ में आता है. ठीक है, जब आप खुद होके पढ़ोगे तो आप पीडीएफ डाउनलोड करते हो, पीडीएफ, गो थ्रू दी पीडीएफ, उस पीडीएफ में क्या लिखा था. टाइम मैनेजमेंट, मेक दी टाइम टेबल वाले, इट्स इंपॉर्टेंट. मेक दी टाइम टेबल के पूरे दिन में 1 घंटा तो रिवीजन करना है. सो पूरे दिन में जितने आपने वीडियोस देखे होंगे, क्लासेस देखे होंगे, उनकी पीडीएफ को 1 आवर में रीड इट, जस्ट गो थ्रू इट एटलीस्ट वंस, तो ही आप डेली का कवर कर पाओगे. केवल वीडियो देखने के बाद इफ यू आर लिविंग इट, वोंट वर्क. आइदर डू इट टॉपिक वाइज, आइदर डू इट यूनिट वाइज, बट रिवाइज इट. ठीक है. Anything else? Fine. So this was the session, making the effective notes. I believe it was useful for you. And enroll for the classes, enroll for the previous year question series, enroll for expected MCQ series, right? And thank you everyone for being there. Tomorrow morning, we are going to do Employee Provident Fund Act, and evening, we have two special classes. Tomorrow evening, we have two special classes. One at 5 p.m., that is your MCQ series, expected MCQs, and at 6 p.m., we would be having a class on compensation of expatriate, international human resource management से related. So दो classes होंगे back to back. Okay? Fine.
So thank you everyone for being there. Give your feedback and do share the link with others. So we would be meeting tomorrow morning. I hope this session was useful. You find it somewhere, it would be useful for you.